अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। तो आज की वीडियो में हम पीएसएल का प्रीव्यू देंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। एज मोस्ट ऑफ यू नो, पीएसएल 11 अप्रैल या फ्राइडे, जो अपकमिंग फ्राइडे है, से शुरू हो रहा है। एंड मैंने जो पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ था उसके बाद वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा इवेंचुअली एक ही दफ़ा पीएसएल के शुरू होने से पहले वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता है, पीएसएल में जो खिलाड़ी ड्राफ्ट में सिलेक्ट होते हैं उसमें फिर वो कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कुछ सप्लीमेंट्री हो जाती हैं, कोई कोई सीरीज का मसला हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, या आज इस दफ़ा कोई एक नया जो हुआ है कि आईपीएल खेलने चले जाएं, तो इस तरह के अगर कोई मसाइल हो जाएं तो फिर वो चेंजेस आ जाती हैं। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा फाइनली जब थोड़ा सेटल्ड टीम्स हो जाएंगी और ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि यही स्क्वाड्स होंगे, तब वीडियो बनाऊंगा। सो पिछले साल के चैंपियंस, द डिफेंडिंग चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड से शुरू करें तो ये उनकी रिटेंशंस थी, काफ़ी एक्सपेक्टेड थी, नो अनएक्सपेक्टेड। कभी कभार जिस तरह पीएसएल में होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये खिलाड़ी रिटेन हो जाएगा, लेकिन रिटेन होता नहीं है because of some constraints in the retention system, या maybe the team doesn't want them anymore. So Islamabad ki retentions were expected. The main guys in Azam Khan, Haider Ali, Naseem, Shadab, Salman, and Roman Reis was also retained for like a more of a mentor role. तो उनके अगर टीम पे आए तो once again they have picked a strong core. They've replaced the missing pieces that have left for other teams या जो ड्राफ्ट में जिनको रिटेन नहीं कर पाए, with newer players who, in my personal opinion, are able to replace the holes left by the players who have left very well. अगर उनकी बैटिंग लाइन पे आए तो साहिबजादा फरहान has joined them as a supplementary player. He wasn't picked in the original draft, लेकिन he has joined them as a supplementary player back on the basis of his national T20 cup की जो उसकी performance थी. He batted very well, was far and away the highest scorer. They also got Mohammad Shahzad, क्योंकि वो President's Cup जो हुआ उसमें he was player of the tournament, so they brought him in. They got Saad Masood, who was one of the breakout stars in the Champions T20 Cup, which happened in December. So they got him in. Obviously, Haider Ali, Azam Khan, Colin Munro, इन सारे खिलाड़ियों को मिला के उनका जो आइडेंटिटी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ऑफ अ टीम दैट इज वेरी एक्सप्लोसिव बट आल्सो हैज अ टेंडेंसी टू एक्सप्लोड ऑन देमसेल्व्स ना। तो it's still the identity of Islamabad United is strong. Um, uh, with their overseas score, it's a decent overseas score, I would say. Colin Munro has played in the PSL for many years now, and he is a great player. Andreas Gauss, who played very well in the T20 World Cup in 2024 for USA, उसको लेके आए हैं। जेसन होल्डर है, रायली मेरिडिथ है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कराने वाला बॉलर। बेन डॉर्शस है, someone who can bat and ball as well. We saw him in the Champions Trophy. They also have Matthew Short. They really went into their Australian core, and Matthew Short, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई होप आप लोग जानते हैं कि वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन। अगर वो खड़ा हो जाए तो he is someone who can win games for you on his own. And paired with Saibzada Farhan, I believe this is going to be a very explosive pairing at the top for Islamabad. Unki bowling is good once again. Naseem Shah, Hunain Shah, Shadab, Imad Wasim, Roman Reis can play a few games. What's his name? Riley Meredith with the pace. Ben Docious, who can provide you runs with the bat and some quality overs with the ball. They also got Muhammad Nawaz, who is in hopes of resurging his career once again. Saad Masood is a very capable player. So it's interesting to see how Islamabad does this year, and I can see them being a comfortable lock for the playoffs once again. अब अगर हम इटर्नल रनर्स अप के पास जाएं तो the next team is the Multan Sultans, who are
a team that always makes the finals but just cannot get over that hump. हर दफा फाइनल में पहुंचते हैं, हर दफा फाइनल में हारते हैं। पिछले 5 स्ट्रेट फाइनल्स आई थिंक देव मेड एंड देव लॉस्ट 4 इन अ रो। तो सवाल इस सवाल भी यही है कि कैन दे फाइनली डू इट। और वंस अगेन लाइक प्रीवियस ईयर्स, वेरी अंडरवेलमिंग टीम ऑन पेपर, लेकिन दे ऑलवेज सीम टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ these underwhelming players क्योंकि उनकी combination it just always somehow makes sense. You know, they get great overs out of mediocre players, runs out of anchors, and like every player that you think is just a mediocre player, someone who does not probably does not fit into a PSL team, they go to Multan and they start performing like they've never performed before. एक चीज जो आप इस मुल्तान की टीम को देखते साथ ही नोटिस करेंगे कि हाउ ओल्ड दिस टीम इज। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम आर अबव 30। जॉनसन चार्ल्स, शाय होप, इफ्तिखार, रिजवान, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, इट्स अ वेरी ओल्ड टीम एंड they will be hoping कि इनका ये जो experience है of playing in multiple different leagues and just experience as a whole will come up clutch for them, and like their experience will be the difference maker in these matches. तो उनकी retentions तो once again expected, the big names they were retained. एक जो बड़ा नाम था जो retain नहीं हो पाया because of the retention rules once again was मोहम्मद अब्बास अफरीदी, and unfortunately they could not retain him in the draft as well. So Abbas Afridi left and went to the Karachi Kings, but we'll discuss this in the Karachi Kings section of the video. So Multan Sultans once again. I think it's an underwhelming team. If we discuss their team, they got Kamran Ghulam in the draft, as I mentioned before, Johnson Charles and Shai Hope as well. Their bowling attack looks promising with players like Faisal Akram, Josh Little, David Willey, who's a brilliant power play bowler in T20s, Chris Jordan, who can provide you valuable runs with the bat and can bowl in the death as well. So it's a decent team. Shai Hope, who has been in very good form as of late. So it's a good team. You can definitely tell that there's something cooking here, but on paper it just does not scream to you. Now it's just a very how to describe this? A very unappealing team. Just bunch of old guys. कोई यानी ऐसा यंग सुपरस्टार खिलाड़ी नहीं है जिस तरह पेशावर में साइम है या इस्लामाबाद में आजम खान है या हैदर अली है या कराची में इरफान खान न्याजी है। It's just a very old boring team of players that you've seen a million times before in a million different leagues. So that is my main knock on Multan. For me to predict what Multan will do this year is very difficult क्योंकि जिस तरह मैंने कहा उनकी टीम ऑन पेपर तो इट लुक्स नॉट वेरी गुड। सीधी सीधी बात है, शुगर डैडी ने फिर से दरमियानी सी टीम बनाई है। तो अगर हमने ट्रॉफी देनी होती ड्राफ्ट में शोधियां करने की तो दे वुड डेफिनेटली बी द चैंपियंस, लेकिन अगर एक्चुअल प्लेइंग पे आए तो यार मुल्तान का यही मसला है कि दे ऑलवेज लुक मीडियोकर ऑन पेपर, लेकिन दे टेंड टू परफॉर्म when we actually get to the matches. So it's very difficult for me to say that Multan is going to miss the playoffs. So I think they're gonna still make it because of this experience that they have. But I think it's definitely going to be closer this year than it has been in the previous years. एक प्लस पॉइंट जो मुल्तान सुल्तान्स को इस साल बहुत मिलेगा वो ये है कि दे गॉट माइकल ब्रेसवेल एट द परफेक्ट टाइम, क्योंकि माइकल ब्रेसवेल जिस आजकल परफॉर्म कर रहा है, अगर इसने 6-7 महीने पहले परफॉर्म करना शुरू किया था तो पहली बात इसने तो पीएसएल में होने की थी, वुड हैव बीन इन द आईपीएल। लेकिन अगर ये जिस तरह परफॉर्म कर रहा है और आईपीएल में ना सिलेक्ट हुआ था तो ही वुड डेफिनेटली हैव बीन one of the top two picks with either going to Lahore or to Quetta. So Multan is very lucky that they got Michael Bracewell. Bowling attack pe, I also forgot to mention Mohammad Hasnain, who has finally left my Quetta Gladiators, alhamdulillah.
एंड एज अ क्वेटा ग्लैडिएटर्स फैन मैं बता रहा हूँ, इसने पहले 3-4 मैचों में अच्छा परफॉर्म करना है, एडिट्स आना शुरू हो जाएंगी, हसनैन इज बैक, लीव्स क्वेटा, हसनैन इज बैक। दैट इज द इल्यूजन ऑफ मोहम्मद हसनैन। इसने पहले 3-4 मैच में परफॉर्म करना है, और फिर जो इसने हरकतें कर दी है ना, रोगे मुल्तान वाले, रोगे। तो I don't see a good ending to this whole saga of Mohammad Hassan and Multan Sultans. Lekin once again, Rizwan captain and he's going to get the best out of him. Or Akif Javed is also in Multan. So let's see how Multan's bowling attack fares. Now coming on to one of the most successful franchises in PSL history, लेकिन ऐसी टीम जो हर दफा प्लेऑफ्स में पहुंचती है, लेकिन हर दफा प्लेऑफ्स में गंद करती है, और हर दफा एडिट्स बनाती है, और हर दफा सबसे पहले प्लेऑफ्स में खत्म होके साइड पे जाके बैठ जाती है, लेकिन उनके फैंस हजार, क्योंकि उनके पास है किंग पेशावर ज़ल्मी। और वंस अगेन पेशावर ज़ल्मी ने वही फार्मूला इंतखाब किया है कि फुल बैटिंग, बकवास बॉलिंग। और इस दफा तो देयर बैटिंग इज इवन मोर एक्सप्लोसिव देन बिफोर। बाबर आजम, आई लव हाउ आई मेंशन एक्सप्लोसिव एंड देन मेंशन द स्लोएस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मजाक कर रहा हूं, डोंट किल मी। बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, टॉम कोलर कैडमोर, आई विल कम टू हिम लेटर, मैक्स ब्रायंट, अब्दुल समद, मिचेल ओवन, व्हाट अ एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। और अब इन सारे खिलाड़ियों को आप सुन के सोच रहे होंगे कि यार इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइन है, एंड यू आर सीइंग कि दे आर गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड इन द प्लेऑफ्स अगेन। फिर हम आते हैं बॉलिंग में। मोहम्मद अली, आरिफ याकूब, वन सीजन वंडर मेहरान मुमताज, मे बी परफॉर्म्स वेल, लेकिन अभी तक he has only performed in one season. World's most economical bowler Alzari Joseph, Naheed Rana, who's going to miss half the year, Sufyan Mukim, who is very good right now, lekin let me remind you, he has a tendency to be very expensive. Hussain Talat. The difference between their batting and their bowling is night and day. Batting देखो तो world class batting attack, hitter after hitter after hitter after hitter, टीम परफेक्टली मेड फॉर बाबर आजम, कि बाबर अपना एक साइड से टुक टुक कर सकता है, अपनी इनिंग बिल्ड कर सकता है, और दूसरे एंड पे सारे हिटर हैं। और फिर बॉलिंग पे आओ तो ऐसे लगता है कि वीराना पीएसएल तो बिल्कुल फारिग लीग है, हमारे पास तो कोई काम के बंदे ही नहीं आते। और ये कहानी हर साल पिछले 4-5 सालों से पेशावर की होती है कि देयर बैटिंग इज एलीट, देयर बॉलिंग इज डेफिनेटली नॉट। तो इस वजह से I'm going to predict the same outcome for Peshawar. They're going to finish second or third or whatever. They're going to make the playoffs and they're going to get eliminated in the playoffs once again. अब हम आते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास। बेस्ट टीम इन द पीएसएल, कोई मुकाबला ही नहीं है यार हमारा। कोई एक टीम पीएसएल की निकाल के दो, ठीक है, जिसको सरफराज ने कैप्टन किया, ऐसे बंदे ने कैप्टन किया हो जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। कोई और टीम बताओ जो पर्पल कलर पहनती हो और इतनी खूबसूरती से पहनती हो। दुनिया की बेहतरीन टीम, गॉड इवन बेटर। रिटेंशंस में आए तो रिटेंशंस लिस्ट देखो, एक से बढ़ के एक हीरो। हमारा कप्तान सऊद शकील, हाय हाय हाय, लेफ्ट हैंडेड प्योर बैट्समैन। सईद अनवर क्या चीज थी, सऊद शकील देखो यार, इस तरह को ओपनर होता है। और फिर हमने देखा कि सऊद शकील इतना प्यारा ओपनर है, तो एक ओपनर क्या 10 ओपनर लेते हैं। एक ओपनर, हमें क्या पता कि सिर्फ 2 ओपनर, हमने ये सोचा 7-8 ओपनर रखेंगे तो हमारे 7-8 ओपनर हो जाएंगे तो हमारी बैटिंग लंबी हो जाएगी। ओपनरों पे आए हसन नवाज, सऊद शकील, ख्वाजा नाफे, हसीबुल्लाह खान, फिन एलन, कुसाल मेंडिस, 3-4 और रख लेते ओपनर। इतने कम ओपनर रखने की क्या जरूरत है। और डरो पाकिस्तान, डरो, आ रहा है, वो आ रहा है, मार्क चैपमैन आ रहा है, जस्ट इंतजार कर लो उसका बच्चा हो जाए, लेकिन आ रहा है। बच्चों, तुम लोगों को इस दफा सही ठोकेगी कोयटा। बॉलिंग अटैक तो हमारा प्यारा आमिर, अकील हुसैन, अबरार, काइल जेमिसन, शॉन एबर्ट, वसीम जूनियर, उस्मान तारिक, मिस्ट्री बॉलर, कोई मुकाबले ही नहीं है यार इस साल कोयटा का।
कोई टीम कोयटा की कैलिबर की है ही नहीं। और अभी तो मैंने मेन खिलाड़ी जिक्र ही नहीं किया, राणा फहीम अशरफ भी हमारी तरफ से है। ओ यार, मैं तो कहता हूँ खत्म करो पीएसएल, छोड़ो, टाइम ना जाया करो, मुल्क का टाइम जाया ना करो, ट्रॉफी हमें दे दो, हम चुप करके ले लेंगे, खुशी से ले लेंगे। हम शरीफ बंदे हैं, हम नहीं चाहते कि बाकी टीमें जलील हों, 30-30, 40-40 हजार बंदा स्टेडियम में आए, उनके सामने आप लोगों की बेइज्जती हो। ट्रॉफी हमें दे दो, हम शराफत से लेके कोयटा चले जाएंगे और हम उधर जाके अपने भंगड़े मारेंगे। तो वंस अगेन कोयटा गोइंग टू फिनिश फर्स्ट, एक मैच भी हम नहीं हारेंगे और ट्रॉफी हमारी है। थैंक यू। और लीग की सबसे दो ओवर रेटेड टीम्स, द मोस्ट ओवर रेटेड राइवलरी इन द वर्ल्ड, वही पिछले साल फिफ्थ और सिक्स्थ फिनिश हुई थी। तो अब उन दोनों पे चलते हैं एंड लेट्स गो टू द फ्रेंचाइज विच इज बेटर ऑफ द टू। दोनों ही सरासर अगर बात करें तो दोनों ही बकवास फ्रेंचाइजेज हैं, 2-2 साल परफॉर्म करके अपने आप को पता नहीं कैसा समझती हैं। लेकिन लेट्स गो टू कराची फर्स्ट। कराची की ये रिटेंशन लिस्ट है और टू बी ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट वेयर रिस्पेक्ट इज ड्यू, कराची की इस साल की टीम अच्छी है एंड मोस्ट ऑफ दैट इज बीइंग कैरीड बाय देयर इनसेन ओवरसीज स्कोर एंड देयर टॉप ऑफ द ऑर्डर। David Warner for the first time will play in the PSL. Kane Williamson for the first time will play in PSL. He's going to miss 5-ish games, lekin he's going to play. Tim Seifert, in the form of his life, he will be back for Karachi. King Shan Masood, test match maestro, he will be in the PSL. दुनिया का सबसे निकम्मा फजूल तरीन बैट्समैन in the world, James Vince, who always seems to perform for Karachi, he will play in the PSL. Respect where respect is due to James Vince, उसने PSL के लिए स्टैंड लिया था, so I'll give him that. और इस साल मिडिल ऑर्डर में भी उनके अच्छे एडिशंस हैं, खुशदिल शाह, लिटन दास, what's his name, the young guy who played in the under-19 Asia Cup, Mohammad Riazullah, very good batsman, Arfan Minhas, Irfan Khan Niazi, and the most improved part for them is definitely their bowling. Obviously, some mediocre bowlers like Hassan Ali and Zaid Mahmood still there. लेकिन फवाद अली, I think उन्होंने एक emerging खिलाड़ी लिया, he looks good. Then Adam Milne, Abbas Afridi returns. So they're bowling Arfan Minhas. So as I said, Karachi's team looks very good this year. Or I'm going to say Karachi is going to make the playoffs this year. Their team is good. Their combination looks great. उनका बस एक मसला ये है कि who is going to be the emerging player? क्योंकि as some of you may not know, Arfan Minhas is not going to count as emerging. So either Fawad or Riazullah has to play. So depending on the situation, both of them can be given a chance to play. But I think Fawad is going to be the main emerging because Riaz is only 17 years old, so a bit of a अर्ली टाइम, क्योंकि थोड़ा जल्दी है उसको लाने के लिए, तो एक आध साल उसको ग्रूम करें एंड देन सेंड हिम आउट। एक आध मैच अगर खिलाना है तो देन इट्स नो प्रॉब्लम, बट आई थिंक दे शुड ग्रूम हिम अ बिट। एंड नाउ टू द वर्स्ट फ्रेंचाइज इन पीएसएल हिस्ट्री, द टीम कैरिड बाय राशिद खान। अब ये ना कहना 2020 में तो राशिद खान, 2020 में भी राशिद खान पहले 3-4 मैच खेला था जो तुम लोग जीते थे, तो तुम लोग प्ले ऑफ में पहुंचे थे। राशिद खान गया, टीम पूरी की पूरी ठुस, एक बबल गम और एक राशिद खान की बेसिस पे इनके पूरा फ्रेंचाइज चल रही है। और वंस अगेन इन्होंने वही दोस्ती यारी वाला कोर रिटेन किया है, शहीन शाह, आरिफ रऊफ, फखर, और फिर रिजल्ट्स भी वैसे ही आने हैं। रिस्पेक्ट वेयर रिस्पेक्ट इज ड्यू, कुछ अच्छी पिक्स थी। आई लाइक द पिक ऑफ डैरिल मिचेल, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू पिक डैरिल मिचेल, आई वाज 100% श्योर दैट दे वर गोना गो विद डेविड वार्नर, लेकिन दे वेंट विद डैरिल मिचेल। कुसाल परेरा इज अ गुड पिक. Sam Billings is a player who is peaking at the moment, so that is a good pick. Muhammad Azab has been doing very well in the domestic circuit in the recent months. Momin Kamar looks like a good bowler. अभी नेशनल T20 कप में अच्छी बॉलिंग गिरा रहा था वो, तो there are definitely positives, लेकिन once again I think उनका जो core है ना, the core is not good enough to win. And then there were just some very weird picks. Asif Ali, I know he's explosive, like he
पीक्स इन लाइक वन गेम, 10 में से एक मैच में परफॉर्म करता है। फिर उन्होंने वही बुड्ढे रिटेन किए हैं दोस्ती यारियां करने के लिए, सिकंदर रजा, डेविड वीजा, यार लेट देम गो। और फिर इनका ये जो बशीरा है ना यार, पहले इस बशीरे को तो निकालो ना, इतना अनोइंग ये लगता है ना बंदा, हर फजूल चीज, चंगा भला कोई इंटरव्यू हो रहा होगा, दरम्यान में आगे बशीरा बशीरिंग करना शुरू कर देगा यार। इसको तो इससे तो जान छुड़ाओ ना यार, इसको निकालो ना, तो कोई थोड़े से लाहौर कलंदर की जो मेरे दिल में नफरत है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। आधी नफरत सिर्फ बशीरे की वजह से है, कसम से। इनका एक और लड़का भी है इनके, आई थिंक लाहौर कलंदर के डेवलपमेंटल सिस्टम से इन्होंने मेरे ख्याल से निकाला है, मोहम्मद नईम, तो उसका मैंने देखे हैं कुछ नेट्स की वीडियोस देखी हैं, तो ये लुक्स लाइक अ डिसेंट बैट्समैन। लेकिन नेट्स से आपको नहीं पता चलता कि कौन कैसा खिलाड़ी है। नेट से अगर देखें तो हैदर अली वुड बी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो yeah, I don't see Lahore's team going far. It's weak. They have holes. They're too old, and their bowling is frankly pathetic. Tom Curran in the year 2025, dear God. So I think it's another year of missing the playoffs for Lahore. और अगर playoffs में पहुंच भी गए तो they're not going far. I don't think Lahore is doing anything special this year as well. अगर अब मैं प्रिडिक्शंस पे आऊँ, टेबल प्रिडिक्शंस पे, तो बॉटम से अगर हम चलें तो आई थिंक लाहौर इज गोइंग टू फिनिश लास्ट दिस ईयर अगेन। देयर टीम जस्ट डज नॉट एक्साइट मी एट ऑल, तो आई थिंक इट्स अनदर year of struggling for Lahore. At number five is always the most difficult part, क्योंकि इससे ऊपर जो पांच टीमें आई कैन सी ऑल ऑफ देम मेकिंग द प्लेऑफ्स, तो उनमें से एक काटना इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी। बट आई एम गोइंग टू प्रोबेबली गो फॉर a shock decision, but I think it's finally the year Multan Sultans ka magic runs out, and they have an off year, and they do not perform well. So I think Multan misses the playoffs. In fourth position, I have the Peshawar Zalmi. एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं, नॉट कंफर्म, कि आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी क्वाइट अ बिट ऑफ अ गैप बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो व्हेन आई से फोर्थ पेशावर, आई डू नॉट मीन के close to it being eliminated. I just think out of the remaining four teams, they are the weakest bunch. उनकी bowling is a massive liability. So because of that, I have them fourth. But I think the top four teams will separate themselves from fifth and sixth very comfortably. In third position, I have the Quetta Gladiators. As much as I love Quetta, I think we do have a lot of problems, especially Mark Chapman. He is going to miss a few games, तो आई थिंक हम उधर थोड़े से पॉइंट शेयर ड्रॉप कर दें। तो नई टीम है, नया कप्तान है फिर से, तो सरफराज भी नहीं है इस साल, तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ फ्यू ग्रोइंग पेन्स। लेकिन आई थिंक वील टेक दिस सीजन डीप, और आखिर में जाके वील फॉल टू थर्ड। तो आई थिंक it's third for Quetta in the regular season. For second, I'm going to go with Islamabad United. Islamabad's team, they always do well in the regular season, the league stage. Like they never seem to do well enough to finish first. I know they did in like 2020. Like that was just a very weird season with the whole COVID and all of that. So उसको अगर साइड पे करें तो आई थिंक Islamabad is going to finish second, and by process of elimination in the league stage, Karachi is going to finish top. I think they're just a very good team. उनकी combination अच्छी है, their bowling is good, their batting is good. लेकिन I can definitely see any of the top four teams finishing first, and like I think these four teams, they can rotate with each other. प्लेऑफ्स पे आए तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट द प्लेऑफ्स, बट आई विल डू इट एनीवेज। जो मेरी सीडिंग है उसके लिहाज से इट्स गोइंग टू बी इस्लामाबाद वर्सेस कराची इन द क्वालिफायर वन, एंड इट्स गोइंग टू बी क्वेटा पेशावर इन एलिमिनेटर वन, व्हिच also means I have picked the four big teams from the early seasons. So for the first match, the qualifier one, I think Islamabad's playoff experience will matter, but Karachi's team
has more winning caliber. So it's going to be a very close match, and it's a very difficult one to call. I'm gonna say Karachi wins the first qualifier. And first eliminator will be played between the Quetta Gladiators and the Peshawar Zalmi, and I think Quetta wins it comfortably. And the second eliminator, Islamabad Quetta, very good match. Both teams are very good. I think Quetta narrowly beats Islamabad. It's a very close match. I think we narrowly beat Islamabad. And in the final, it's going to be Quetta versus Karachi. And as much as I hate to admit it, as much as I hate to say it, I think Karachi is too good. Their combination is good, their bowling is good, their batting is elite. और इस साल एक बहुत ही अजीब सा अजीबो गरीब हो रहा है कि every team I support they make the finals, ठीक है, they make the finals and they get destroyed in the finals. I hope Quetta changes that fate for my favorite teams. लेकिन it's a tough one, it's a tough call. Quetta wins, yeah. I'm not giving a title to Salman Iqbal. Quetta wins the PSL 10 and becomes another team to win the PSL 2 times. So yeah, that is it for today. आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई because I just talked about random stuff over and over. तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें और सबसे ज़रूरी आप अपनी प्रेडिक्शंस दें. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपना फीडबैक दें या आपको लगता है क्या होगा आप दें, तो आप लोग देते नहीं. आई एम आस्किंग यू, give your predictions for this year's PSL. I want to see what you guys think will happen this year, or compare them and possibly have a discussion. So I would love to see your guys' predictions in the comment section. अगर आप मेरे socials पे जाकर मुझे follow करना चाहते हैं, आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में का लिंक है, उधर जाकर मुझे follow कर सकते हैं. और I'll try कि PSL के दौरान ये मैं थोड़ा socials पे ज़्यादा active भी हूँ, थोड़ा सा एक communication करें आपके साथ, fans के साथ. तो yeah, that is it for today. और बस आज के लिए मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़.